actually are going to be the mechanical properties that we are going to very often encounter during our engineering assignments. First of all, the most common and the most popular mechanical properties that we can judge is through stress and strain. Mm-hmm. We are very much familiar with the typical stress strain curve, where we have along the y-axis we have stress and along the x-axis we have strain. Okay, let me discuss another important mechanical behavior, which is force versus displacement. When we have any mechanical component or any sample of an engineering material and we subject it to a force, what is going to happen? It is going to increase in length. It is going to Increase or decrease in either length. increase or decrease in dimension depending on the direction of the force. If it is a tensile force, meaning it is going to Pull the it, extend, component, increase the or length. It is going to change the size. Increase in the direction of the application of force, whereas the dimension is going to decrease in the transverse direction of the application of force. Okay, if we are going to change the direction, if I am going to compress the force, compress the component by applying a compressive force, what is going to happen? Decrease in length. The direction of application of the force is going to experience a decrease in the dimension, whereas the transverse direction is going to experience increase in the geometry or the size, cross-sectional size, or sometimes also the cross-sectional area. So when we are going to subject a component to forces, we are initially going to experience or we are going to observe this kind of a behavior. When Hooke's we are law. going to increase the force, what is going to happen? The length along the application of the force is going to increase. But if we are going to apply a compressive force, the compressive force means it is going to be a negative force. Displacement in the negative direction, then length So it is decreases. going to be displacement in the negative direction. Displacement is not in absolute terms, it is basically delta x. Change in the length. Geometry. Change in length. Extension. So it is going to be extension on this side and compression on in the negative quadrant. Yes, sir. So when we are going to plot this, this is known as an elastic behavior. A point is going to come where we have seen that there is going to be a deviation from the straight line. It is no longer going to remain proportional. Less force, more extension is produced. Initially force was proportional to displacement. But once we are going to cross a certain threshold, it is no longer going to behave linearly. We are not going to experience or we are not going to observe a straight line when plotting F against displacement. So this region where we are going to experience a linear behavior is known as elastic region, or this behavior is known as elastic behavior. In this region, if I am going to unload the sample, what is going to happen? It is going to follow this curve, ultimately going to the origin, where the origin means that the displacement is going to be zero. At the atomic level, I am going to see if I take, if I zoom into the Atoms. sample that I have been provided with. Initially, it is like this. The atoms are arranged in Orderly fashion. an orderly manner and they are closely packed. So if I am going to apply a tensile force, what is going to happen? Elastic limit. Elastic limit. When increase elastic in the limit. length is going Nahin, to take nahin, place, nahin. actually what is going to happen is these atoms are going to
move apart. सर वो लेकिन जो नीचे वाले हैं वो तो सारे एक साथ ही रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने फोर्स लगाई है फिर मैं दरमियान वालों की बात करूँ सर, जो दरमियान में पड़े हैं। वो भी होंगे मैसेज। अच्छा, उनका दरमियान भी इंक्रीज हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। So there is going to be a displacement of atoms with respect to one another. Ultimately, what is going to happen is, let's call this as dx. So sigma of dx is going to be equal to delta x as shown over here. But what happens when we are going to reach this threshold value? Actually, what is going to happen is स्मॉल फोर्स। the interatomic distance is going to increase in size such that it is very easy for this atom to diffuse into this location. It can change places. What is going to happen now? We are going to get something like this. As a result, instead of having this kind of an arrangement, now these atoms have actually, because the interatomic spacing was increased to a level that this atom would easily migrate into the void over here or diffuse into that void. So that is why plastic deformation has taken place. वो At हमेशा this के लिए point, इस्तेमाल even है। if I remove the force, nothing is going to happen. Only the elastic portion. Still, there is going to be some dx, which is less than the the atomic radius. सर Only this part is going to recover. Now this part is not going to recover. This one is known as delta x plastic. This is going to be delta dx elastic. Let's call it dx because we are talking in terms of atoms. or अच्छा atomic. सर आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है। आपने जो वो पॉइंट दिखाया है ना उस ग्राफ में, वो हुक्स, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वहाँ हुक्स लॉ बे होना ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आपने फिनोमेना वो दिखाया वो तो इलास्टिक लिमिट पे होता है, वो तो पॉइंट होता है जिसके बाद प्लास्टिसिटी करती है। वो और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सेम पॉइंट तो नहीं होते ग्राफ में। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? इस पॉइंट के ऊपर सर अगर आप यहाँ पे भी ना, अगर आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें ना, चीज़ जो होती है ना वापस इलास्टिकली ही अभी तक बिहेव करती है। इसके आगे वो पॉइंट आता है जहाँ पे चीज़ प्लास्टिक हो जाती है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट तो एक तो ये कि we can never actually fully locate this point. अगर मैं इधर आ जाता हूँ हाँ, तो मुझे क्या पता कि इससे मैं कितना बढ़ाऊंगा तो प्लास्टिक नीचे शुरू हो जाएगा। इस पे होती नहीं है प्लास्टिसिटी। इससे थोड़ा सा ऊपर भी जाएं प्लास्टिसिटी नहीं, ऊपर होता है थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है फिर शुरू होता है। 2% की ये एग्जैक्ट नहीं पता, 5% पे आ जाता है फिर बाद में प्लास्टिक भी बन जाता है। कुछ 5% हाँ, this is the yield point criteria because the yield point can never be humanly, it is impossible for us to locate the yield point. Let us say इधर मैं आ गया हूँ, फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ, अगर मैं वापस करूँगा ये 0 हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट में लेट से 1 मिलीमीटर इंक्रीज किया, तब भी शायद कुछ ना हो, 1.1 पे शायद हो जाए। ठीक है 1.1 पे वो प्लास्टिक बन जाए। 1 मिलीमीटर पे ये डेविएट कर गया। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि ये 1 और 1.1 के दरमियान किस पॉइंट पे डेविएशन शुरू हुई थी। हाँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा इंटरपोलेट करूँगा 1.05 पे। हो सकता है 1.05 पे हो जाए, हो सकता है ना हो। अगर हो गया दैट मींस वी आर स्टिल इन प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स। इसके दरमियान हो सकता है, कहाँ होगा वी हैव टू स्टिल इंटरपोलेट इट। एग्जैक्ट हमें नहीं पता। चलता रहेगा। ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल टू एक्चुअली पिन पॉइंट द पॉइंट फॉर यील्ड वेयर प्लास्टिक डेफॉर्मेशन इज गोइंग टू। सर डीएक्स इलास्टिक और डीएक्स प्लास्टिक के क्या था? जी सर ये बता दें सर। बता दो। इधर मैंने फोर्स लगाई है, एग्जैक्टली मैं ये पॉइंट कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जब ये डिफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल टच कर रहा हूँ। फोर्स जितनी भी होगी उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिक बिहेवियर शामिल होगा, ये डिफ्यूज हो गए। क्योंकि ये स्टिल प्रोबेबिलिस्टिक है। इसका भी मुझे अभी तक नहीं पता 1.05 है या 1 या दरमियान में किस जगह पे है। सो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डिटरमिन। अगर इसके अंदर मैं मजीद इफ आई इन्वेस्टिगेट इट मे बी इन बिटवीन 1.07
1.1 पे आ जाए, या हो सकता है 1.075 और इसके दरमियान आ जाए, लेकिन किधर आएगा एग्जैक्ट, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डिटरमिन दैट. Are we clear about this? It is humanly impossible for us to determine where exactly the yield point is going to last. Sir, For engineering purposes, we have a yield criterion that if it is within 2% of error, we say it is okay. Sometimes we have different criteria. Sometimes they say it is going to be 5%, sometimes even 1%, depending on how accurate you want to be. For most engineering applications, we follow the 2% criteria. 2% above that point is probably trusted. प्लास्टिक तब तो जब इसके अंदर error आएगा, एक this मिनट is going to be 2%. सर ये जो है, ये वाला region मुझे determine नहीं होगा. ये तकरीबन इस उस रेंज के अराउंड जहाँ पे आपको लग रहा है उसके अराउंड 2% अप 2% डाउन उस रीजन में हो सकता है. That should be 2% of the absolute value. ओके 2% आपकी जो वैल्यू उसकी 2% ऊपर 2% नीचे के अंदर अंदर आ जाना चाहिए. ये जो delta x है, into 0.02 should be. हाँ ओके वो समझ गए सर. अब हमें समझ नहीं आ रहा वो जो वो आपने एक्सटेंड किया ना, आपने दिखाया डायग्राम की स्पेस इंक्रीज करती है, उसके बाद वो प्लास्टिसिटी में वो जब वो डिफ्यूज़ करता है उस फिनोमेना को सर आप फर्दर एक्सप्लेन कर दें. एक नए डायग्राम के जरिए कर सकते हैं सर. अगर ये मैंने let's say तो वो डायग्राम बहुत ख़राब हुआ है. initially I have these two. ओके ठीक है इनिशियली है I apply फोर्स a certain amount of force. What is going to happen? स्पेस. They are going to move apart. Still, this distance dx is less than. हाँ I continue to increase the force. Now it is going to move over here. At this point, dx is going to be equal to r. At this point, it is easy for this atom over here to shift places and move over here. So what is going to happen? Now we are going to have, instead of this one might actually move over here. And Diffusion. we have a transformation from this arrangement to this arrangement. सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई. अब प्लास्टिक डेफॉर्मेशन हो गया. अगर ये इस तरह होता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं फोर्स को रिमूव कर देता तो क्या होता? ये वापस एक साथ आ जाते हैं. प्लास्टिक क्या होगा? बस अपनी ठीक नहीं होता. आंखों के दरमियान में एक एटम आ गया. हाँ So we are going to be left with a permanent deformation. सर यहाँ पे ये बहुत Equal to R. R के बराबर हो सर यहाँ पे डिफ्यूजन इतनी जल्दी में कैसे हो रही है? जगह है तो हो जाती. इतनी जल्दी कैसे हो रही है? लेकिन लाइक सीधा आ गया. एक आपने तो कहा था अगर मेटल को दूसरे मेटल के साथ रखो तो सालों लगेंगे उन दोनों को डिफ्यूज करने में. इसलिए लगता है कि उसको इतने, अगर मैं उसको टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने का भी ये होता है कि ये दूर हो जाते हैं. दूर हो जाते हैं तो स्पेस इतनी हो जाती है कि इजीली एक एटम अंदर चला जाता है. लाइक बेसिकली इनको जो परफेक्ट स्पेस रिक्वायर्ड है इमीडिएटली मिल जाती है और ऊपर से दरमियान में इनकी कोई बाउंड्री भी नहीं है ना. ये बात भी है. हाँ डिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है. So instead of providing with thermal energy, we are providing with mechanical energy. और वो मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना. Thermal में हो. हाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. लॉ ऑफ Okay, so we have two regions in the force displacement curve. This is going to be the elastic region, and this is going to be the plastic region. If I start unloading from this point, it is going to follow the This. line parallel to the original line. हाँ सर पैरेलल रीजन. As a result, we are going to be left with a displacement delta पैरेलल रीजन वो नहीं होगा वो लाइन उस permanent or plastic. सर पैरेलल रीजन के लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं लगाएंगे आप? ई के ऊपर Parallel होना चाहिए. नहीं पैरेलल रीजन प्लास्टिक रीजन में मतलब वो सर जिस तरह ई का आपने बनाया वो फोर्स के साथ है उसका प्लास्टिक रीजन भी वो ई के डायरेक्टली ऊपर नहीं होगा. ये वाला यही वाला. नहीं वो लाइन डिस्प्लेसमेंट और ये बराबर हो गई है थोड़ा सा. मैं एक और चीज़ की बात करूँ सर वो टेक्निकली तो ये भी काम करता है. ये वाला सिर्फ ये वाला प्लास्टिक है, बाकी इलास्टिक है. ये रिकवर हो जाएगा. प्लास्टिक सिर्फ यहाँ पे
हाँ वो समझ आ गया सर, प्लास्टिक रीजन, लेकिन लाइक ऐसे नहीं होगा कि ये ई वाला रीजन है, इसके डायरेक्टली ऊपर ये बड़ा सा जो रीजन है ये प्लास्टिक रीजन है। रीजन ना भी करें क्योंकि ये वाला जो लेंथ है हाँ। प्लास्टिक लेंथ, ठीक है। रीजन की अभी हम इसमें इसलिए नहीं बात करेंगे कि रीजन इज मीनिंगलेस इन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये तो है, Why? अनलेस आपने एरिया निकालना है। Because let us consider we have two samples of the same material. एरिया निकालने के लिए काम आता है सर रीजन। We have the same material. I have, let's say, 3 samples. This is the first sample. This is the second sample, and this is the third sample. I am going to apply the same amount of force on these. In which of these 3 samples do you expect greatest displacement? Over here we have, let's say we have the same. दैट डिपेंड्स ऑन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट के। सर ये तो के पे डिपेंड करता है। A1 है, ये भी A1 है, ये A2 है, where A2 is greater than A1. They are made out of the same material. सर वो F इज इक्वल टू के ई होता है, तो के जो होता है वो डिपेंडेंट के F और E का होता है, तो We cannot basically predict based on the information that it is the same material, यस सर। because each one of them is going to give you different displacement. हाँ This one is going to give you x1, this one is going to give you x2, which is greater than x1. Consider, for example, we have a piece of rubber band. If it is small in length and I apply the same amount of force, it is going to extend less as compared with a longer length. Why? Because consider this longer length. I can actually say that it can be divided into this many equal parts. Let's say we cut the last part and I apply the same amount of force. This one is going to give me a displacement of x. And this one is going to give me how many displacements? 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's say we have 9 parts. So it is going to give me 9 times x for this one, because they are of the same cross-sectional area, but it's just like I've stuck smaller pieces together. And you know, collinear force that is going to be applied equally through all of these segments. So that is why we are going to experience, or we are going to observe a change in length which is going to be 9 times the length for the smaller segment. So it is very difficult for suppliers to actually give you this information based on the dimensions, because if they make a material, they are unaware of the fact that you are going, what kind of dimension are you going to make your component out of. So the good thing about it is that if we rationalize it or we normalize it against area, force per cross-sectional area, per unit cross-sectional area. Now I am going to get that is stress. Stress, if I change this cross-sectional area, so if they have the same amount of length, these two samples, this one is going to extend less, because you can well imagine a thicker sample is going to be stronger and it is going to experience less displacement as compared with a very slender and thin sample of the same material. सर इसको यंग्स मॉडुलस के साथ रिलेट किया जा सकता है? यंग्स मॉडुलस उसमें नहीं कर रहे, अब होगा हाँ अच्छा। स्ट्रेस और स्ट्रेन में, स्ट्रेस और स्ट्रेन में फोर्स और x जो है F is equal to kx होता है, k is going to be dependent on the geometry. But we want to have a constant value for the same material, whether we have a different dimension. For example, we have this dimension or this dimension or this dimension. We want to be free of dimensional, we can say, variations. So we are going to rationalize force. What about area? They have the same length, but still, due to difference in area, we know that there is going to be
change in the amount of displacement. What about these two samples? We have the same cross-sectional area, but the length is different. So we have to rationalize delta x against the original length. We are going to have stress is equal to 4 per unit area, and we are going to get strain. Strain is the change in length rationalized against the total length of the sample, or change in length over the original length of the हाँ sample. सर याद है, जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस, उतनी कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी. तो जिस चीज़ का ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उस चीज़ की कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी ज्योमेट्री के मुताबिक. हाँ Okay, since these two are constant values, so the behavior is going to be the same. We are going to get the yield point as we were getting in the force displacement curve. And the gradient of this curve is known as यंग्स मॉडुलस. the gradient of this straight line. And as long as it is in the elastic region, Young's modulus is going to hold, and we are going to get a behavior, or we are going to get a plot where stress is equal to Young's modulus times strain, where Young's modulus is actually the gradient of this line, एंड द and यंग. it is also going to hold in the compressive region. सर बेसिकली हम यंग्स मॉडुलस को भी यूज़ कर सकते हैं ना बताने के लिए इन तीनों जो हैं सेम मटेरियल के कंपोनेंट्स में, इन तीनों में किसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो जितना ज़्यादा हमारा यंग्स मॉडुलस होगा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा होगा उतनी कम स्ट्रेन होगी, तो स्ट्रेन कम होगी तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कम होगी. एक्सटेंशन कम होगी. इसलिए दो मटेरियल अगर मैं लेता हूँ, एक का ये वाली कर्व है, तो इसका यंग मॉडुलस E2 is going to be greater than E1, E1. और इसकी वजह से जिसका देखिए स्ट्रेन भी कम प्रोड्यूस हो रही है. इसकी वजह से क्या है, आपको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर लेस स्ट्रेन लेस स्ट्रेन, और उस वजह से लेस एक्सटेंशन, ज्यादा मिल रहा है. और लेस एक्सटेंशन हालांकि इन ओरिजिनल लेंथ सेम है. ओरिजिनल सेम है, लेकिन मटेरियल फर्क है. मटेरियल सेम नहीं है. हाँ मटेरियल फ़र्क है. मटेरियल Okay, so the stress strain curve can be generated by taking a sample irrespective of the geometry. We can actually make this sample according to the geometry which is supported by our machine. The machine is going to look like, we'll come to that in one of the coming slides. So we know that stress strain curves are going to dictate different mechanical properties. We'll talk about these mechanical properties in one of the coming slides. We'll also talk, we have already talked about elastic behavior, we've also already talked about plastic behavior. Next, when we are going to plot the stress strain curve, we are going to talk about toughness and ductility. These are important mechanical properties. Okay, so elastic deformation we have just seen over here. Due to the application of force, the interatomic spacing is going to increase to a point where they are going to be large enough for atomic diffusion to take place. So what has happened is, when it continues to grow, one of these atoms is going to occupy this space, and instead of having those number of forces, we are going to have those number of atoms. We are going to increase the number of rows, and as a result, the extension is going to take place, which is permanent. Elastic deformation is reversible, plastic deformation is not reversible. So the stress strain curve is going to have the same kind of behavior as the force and extension curve, except that it is not going to be affected by the geometry of the sample. We have already plotted the force versus extension curve. We have seen that up to a point there is going to be a straight line. After that there is going to be deviation from the straight line, and the point where it is going to deviate is going to be known as the yield point. After the yield point, plastic deformation is going to start taking place. And we've also seen that it is humanly impossible for us to pinpoint the yield point. So we have certain criteria associated with that. We'll discuss that later. Okay.
we have the concept of engineering stress. Engineering stress is force, the applied force divided by the original area. Why original area? Why not instantaneous area? It's all about convenience. It is easier for us to just record the initial area rather than take, because what is going to happen when we are going to extend? Remember I told its you cross that sectional area will decrease. decrease, and it is quite, you can say, cumbersome and tedious to take instantaneous measurements after maybe 1 second or 2 seconds सर and determine the area after extending. हम फिर डेरिवेटिव के थ्रू ये नहीं कर सकते सॉल्व डिफरेंशिएशन हाँ हाँ ये कोरिलेट करेंगे. ये वाला जो है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है. इंजीनियरिंग का मतलब ये इट इज फॉर आवर कन्वीनियंस. इंजीनियरिंग मींस कंफर्टेबली be able to comfortably conduct these experiments. हाँ हम साइंटिस्ट True हैं. stress is going to be, अब इसमें एक्सटेंशन हो गई, ये एरिया भी डिक्रीज हो गया. आफ्टर 1 सेकंड अब मैंने फोर्स बढ़ाई है, तो मुझे चाहिए तो ये है कि नया एरिया जो आ रहा है उसकी वैल्यू मेजर करूं, लेकिन उसको करना जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. सो फॉर दैट वी हैव एक्चुअली devised a convenient method where we are going to just simply continue with the original area rather than taking the instantaneous area. Fortunately, engineering stress and true stress can be calculated using a correlationship. We'll discuss that in one of the coming slides. Okay, what if the force is not like this? It is in the shear direction. This is a shear force. It is not collinear. It is, these two forces are not passing through a common point. सर दोनों फोर्सेस लग रही है या इनमें से ये दोनों फोर्सेस लग रही है? सर फिर तो चीज़ रोटेट करेगी. रोटेट नहीं कर सकती. अच्छा फिक्स किया हुआ है अपनी जगह किया हुआ है, तो क्या होगा अगर पे ये पोलर पार्ट. सैंपल, तो ये इस तरह का क्या हो जाएगा. Now the deformation is not going to be in terms of displacement, it is going to be angular. Angular Rotation, displacement. ठीक आपने बात की रोटेशन होगी, इसकी जो deformation है वो भी rotational होगी and it is going to be measured in angular terms. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे कि इनिशियल पॉइंट से कितने एंगल पे ये गया है. तो फिर इसमें सर लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा ओवरऑल. ऐसा नहीं आएगा लेकिन शेप में आएगा. शेप में आएगा. हाँ शेप रोटेट So कर. this kind of stress is known as shear stress, and shear, this is linear stress or axial stress. Axial can be tensile or compressional. यहाँ पे इसने tensile लिखा है लेकिन compression भी हो सकता है अगर force negative हो. और ये वाला क्या है? This is the shear stress, and the shear strain is going to be expressed in angular terms because it is giving rise to an angle rather than change in length. So we have common states of stresses which we find in our everyday life. Looking at this cable car assembly, this is basically for joyrides. We have seen this a lot when we visit amusement parks. Okay, over here we see a column which is actually balancing, or it is supporting the whole mechanism, and it is under compression as well as, because of rotation, what is happening? We see torsion taking place. So the stress in this case is going to be torsional stress, and torsional stress, we have seen that shear stress is a form of rotation. Torsion is also a form of rotation. So torsion can be expressed in the form of shear stress. We'll not go into the details of that because that is a part of the next course, which is mechanics of solids or mechanics of materials. So we'll just leave it over here for the next course. And what about other kind of stresses that we find? You see that there is going to be a lot of load pressing down on this column, and that is going to cause compressive stress. Plus on the cable, you can see that the cable is under tensile loading, it is being pulled apart. So that kind of tension is known as, is going to be an axial stress. In nature as well, we see these kind of structures, a rock which is resting on a natural formation, and this
neck over here is under compressive stress. Just looking at these columns in the building, you can see that they are under a lot of compressive stress because of the load of the building. Yes. Similarly, we have bridges, we have different members, even the trees are under stress. Sir, engineering stress is considered both tensile and compressive stress. Please. Tensile, compressive, as well as even shear stress. Shear stress is a engineering stress. इंजीनियरिंग में स्ट्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस जब भी आप ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा, अगर इंस्टेंटेनियस एरिया से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, ट्रू स्ट्रेस हो जाएगा. True stress. Other forms of stresses apart from tensile, compressive and shear stress, we have hydrostatic stresses or we have biaxial stress. Consider, for example, I have a balloon and it has a high pressure on the inside. So at the surface, if I have an element on the surface, it is being pulled in this direction as well as this direction. ऐसे ही होगा balloon के surface पे. Similarly for a pressure vessel के अंदर pressure है, it is being pulled in this direction as well as this direction. All four directions. All four directions. Basically इसको हमने वैसे कर दिया, लेकिन इस डायरेक्शन में भी एक होता है स्ट्रेस, बट इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड विद द सरफेस स्ट्रेसेस, सो वी टेंड टू इग्नोर इट. ये अगले कोर्स में हम देखेंगे प्रेशर वेसल डिजाइन के अंदर के व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस डू वी एनकाउंटर इन प्रेशर वेसल. सर बायएक्सियल टेंशन वाला वो जो है स्ट्रेस, ये समझ नहीं आ रहा, इसमें कहाँ कहाँ पे लग रहा है स्ट्रेस? एक बॉक्स के थ्रू आपसे समझा सकते हैं? Let us consider that we have a balloon. इसके अंदर हमने हाई प्रेशर पे फ्लूइड फिल किया. फ्लूइड. So on the surface क्या होगा? एक फोर्स लगेगी उस प्रेशर की वजह से. प्लस अगर इसको इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ भी लगेगी और दूसरी डायरेक्शन में भी लगेगी. हाँ. क्या होगा अगर इसको मैं आइसोलेट कर दूँ स्क्वायर को, इसके ऊपर इस तरह की फोर्स लग रही है, इस तरह भी लग रही है. Okay. So instead of having a uniaxial thing, It has a stress on two axes. अच्छा सर, इसमें क्या जो डायगोनल है वहाँ पे लग सकता है इस सिनेरियो में स्ट्रेस या नहीं? वो लगेगा और ना भी लगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो अभी डेडलाइन पे लगे तो हम उसे कंप्लीट पे कर देंगे. हाँ. अभी इस स्टेज पे नहीं पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में. लेकिन अगर लाइक इस इन चारों के साथ साथ दो और फोर्स अगर हम लगा दें कि इस तरह से, अगर लगा भी दें तो उसको आपने रिजॉल्व करना है इसमें और इसमें और इसमें. अच्छा. ये इसमें ऐड हो जाएगी इसमें. ठीक है समझ गया सर. लेकिन ये वाली फोर्सेस को आप कोई और कंपोनेंट लेके इस डायरेक्शन में भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक. ये करके इस तरह कर दें कि ये फोर्सेस जो है वो टोटली इस डायरेक्शन में आ जाए. अच्छा ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये भी नहीं करेंगे अगले कोर्स में करेंगे. ठीक है सर. Plus, if we have the third dimension as well, like this fish underwater, it is being subjected to forces in all directions. It is under pressure. Pressure is a form of hydrostatic compression. इसी तरह अगर इसको मैं वैक्यूम में रखता तो hydrostatic tension में आ जाएगा. We have already seen that due to the application of force, we are going to see extension under tensile loading and compression under compressive loading. And then in shear stress, we came to appreciate the fact that it is going to be angular. The displacement is going to be angular, and as a result, we are going to express it in terms of the angle over here, tangent theta. So, tangent theta for small values is going to be approximately equal to theta, and the angular displacement can be expressed in terms of tangent of this value. Tangent theta is proportional to theta, and for small values it is going to be equal to theta. So gamma is approximately equal to theta for small values. In engineering, we always want to avoid plastic
deformation. And for plastic deformations to be avoided, gamma is going to be approximately equal to theta, since tangent theta is equal to theta. बहुत छोटी वैल्यू तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट थीटा. Strain is always dimensionless because tangent of theta is dimensionless, and over here as well we are actually dividing the same quantity, meter divided by meter or millimeter divided by millimeter. As long as we are consistent about the units, it's going to be सर इसमें हम एंगल को इन डिग्रीज लेते हैं या रेडियन लेते हैं? रेडियन, ठीक है. okay. How to construct? चलिए हम कल पढ़ेंगे. How do we construct the stress strain curve and how do we set up the apparatus in order to? ठीक है सर. ओके सर. We'll stop over here. Do we have